Your Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and esteemed guests, thank you so much for joining us here this evening, and welcome to the official ceremony of the Global Faith Leaders Summit, held under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates. We are here tonight to harness the collective wisdom of religions in raising climate change awareness and to launch the ambitious, unified interfaith statement on climate action. Over the past years, faith-based organizations and religious figures have demonstrated clear commitment and leadership in addressing environmental issues. Countless initiatives and actions exemplify this commitment, one being the document on human fraternity signed by His Holiness Pope Francis and His Eminence, the Grand Imam of Al-Azhar, Professor Ahmed Al-Tayyib, here in Abu Dhabi 4 years ago. The declaration specifically calls on humanity to work to stop environmental decay. This document was followed by a historic interfaith environmental appeal launched from the Vatican in 2021 in the lead up to COP26. Now, only weeks away from the opening of COP28, this moment is a natural continuation of these past efforts to leverage religious perspectives on behalf of the environmental crisis. Over 30 diverse religions and beliefs are represented here tonight, as well as representatives of various sectors of society. It is truly inspiring to see you all from different faiths, backgrounds, and fields here together for a common cause to save our planet, our shared home. I'm delighted now to introduce Judge Mohammed Abdel Salam, Secretary General of the Muslim Council of Elders. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يتوج لقاؤنا هذا حدثا مهما، وهو إطلاق نداء الأديان من أجل المناخ في هذا المشهد البليغ في رمزيته لكل معاني التنوع في الدين والعرق والثقافة واللغة واللون والزي. لقاؤنا اليوم يأتي في رحاب دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف هذه القمة، قمة الأديان من أجل المناخ، لنستطيع معا من خلالها إرسال رسالة موحدة إلى قادة العالم وهم يستعدون للقدوم إلى دولة عرفت باستدامة مبادراتها لتحقيق التعايش والتسامح حتى أضحت عاصمة للأخوة الإنسانية. نلتقي هنا بمناسبة حدث عالمي كبير، هو المؤتمر الأول، المؤتمر 28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي يحل موعده بعد أيام قليلة. ومن حق العالم، بل من حقنا جميعا، أن نسأل لماذا نحن هنا في هذه القمة، وكيف وصلنا إلى هنا؟ لماذا يتداعى 175 رمزا وشخصية تمثل أكثر من 22 ديانة ومذهبا دينيا مختلفا من قرابة 40 دولة عبر العالم لتلتقي على قضية واحدة، وهي حماية المناخ؟ واسمحوا لي أن أشارك معكم سريعا قصة هذه المبادرة. قبل أقل من عام، وفي اتصال هاتفي تشاوري بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مع أخيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد، كان يتناول الاهتمام المشترك بأهم التحديات الفكرية والإنسانية التي تواجه الأمة والعالم، وخاصة تحدي المناخ. وكان الحديث الدائر حول كيف يمكن تعزيز
دور أكبر للزعماء والقادة الدينيين في مواجهتها. ثم بعد ذلك طرحت هذه المبادرة على قداسة البابا فرانسيس، الذي وجدنا منه دعما كبيرا وتشجيعا لهذه الفكرة المهمة، وهي أن يجتمع القادة والرموز الدينيون معا ليعلنوا موقفا مشتركا من هذه القضية الكارثية. بعد ذلك طلب مني شخصيا فضيلة الإمام الأكبر أن أعرض استراتيجية هذه المبادرة على رجل يدعم كل مبادرة تسهم في نشر وتعزيز التسامح والحوار، ليس فقط في هذا البلد ولكن في المنطقة والعالم، ويدعم كل جهود مجلس حكماء المسلمين في هذا الصدد، وهو الوالد الكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي أكد من اللحظة الأولى دعمه الشخصي ودعم وزارته الاستثنائية وزارة التسامح والتعايش لهذه المبادرة ولكل مبادرة يمكنها أن تسهم في إنجاح جهود الدولة في مواجهة تغير المناخ، وبخاصة ما يأتي من مبادرات من الإمام الأكبر والبابا فرانسيس. كان هذا المشروع الذي بدأ اليوم بحق مكللا بهذه القمة التاريخية، ولا يمكنني أن أتجاوز الدفع والدعم من الرجل المعني بمشروع التحول الطاقي في هذه البلاد، والذي يقود الفريق الرائع للتحضير لهذه القمة العالمية المرتقبة COP 28، أخي معالي الدكتور سلطان الجابر. أما لماذا نحن هنا؟ فلشعورنا بحجم مسؤولية الدين ورموزه وقدرة رموز الأديان على مخاطبة العالم وإسماع صوت الإيمان المشترك بمكانة الإنسان في هذه الأرض وحقه الذي تتهدده أخطار التغير المناخي في العيش بكرامة وأمان. نحن هنا لإعلان رسالتنا المشتركة وندائنا الموحد من أجل المناخ إلى COP 28 وقادة العالم المشاركين فيه، من أجل أن يكون هذا البيان منصة للتشاور والتحاور والاعتناء داخل أهم القمم العالمية التي تنظم من أجل حماية الكوكب. إن توقيع حضراتكم اليوم على هذا النداء يؤكد عمق الترابط الذي يجمعنا، ويبرهن على أهمية وحدة الرموز الدينية في إبلاغ رسالتهم إلى العالم كي يوقف مسار الفناء الذي تمضي إليه الأرض التي جعل فيها الإنسان خليفة لله. إن هذا التجمع الفريد الذي نراه اليوم لأبرز القادة والرموز الدينيين على وجه الأرض، وبخاصة في هذه اللحظات الاستثنائية والحرجة التي يعاني فيها العالم من تزايد وتيرة الحروب والصراعات والكراهية، هي لحظة فريدة ولحظة مهمة. وهذه الكراهية والصراعات والحروب لن تتوقف إلا بوحدتكم معا وتكاتفكم من أجل وقفها. فهذه الحروب إن استمرت لا قدر الله بهذا الشكل فلن تبقي لنا ولأجيالنا بيئة نحافظ عليها أو مناخ يستمتع بالمحافظة عليه أطفالنا. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. Thank you, Judge Abdissalam. I would like to invite His Excellency Professor Mohammed Al-Mahrasawi, former President of Al-Azhar University and Chairman of the Higher Committee of Human Fraternity, to deliver his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم. في كلمات سريعة أذكر لكم عناوين بعض المؤتمرات والمنتديات التي نظمتها جامعة الأزهر لمواجهة تغيرات المناخ وتلوث البيئة. الطاقة حق ومسؤولية، مواردنا حياة أولادنا، تغير المناخ تحديات ومواجهة، منتدى نقطة مياه تساوي حياة، ومنتدى التنوع البيولوجي. أما السيدات فكن يعملن بمقابل زهيد في تقشير الروبيان الجمبري لمزارع إنتاجه، ويقومن بإلقاء المخلفات في الطرق أو في البحيرة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تلوث المياه ونفوق الأسماك، ومن ثم
انتشار البطالة بين الصيادين. عالج هؤلاء الطلاب تلك المشاكل أولا بتحويل قشر الجمبري إلى بهارات عالية المستوى. ثانيا بإدخال القشر أيضا في صناعة المصافي، الفلاتر، فلاتر المياه وفلاتر الكمامات. ثالثا بإنتاج سماد للأرض يفوق في جودته السماد العادي 150 مرة. بهذه الحلول الإبداعية والواقعية التي تستجيب لحاجات الناس تم علاج أسباب تلوث البيئة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في البحيرة، وعاد الرجال إلى العمل، وتم القضاء على البطالة، وارتقى الوضع الاقتصادي. ألا ترون معي أيها السادة الحاضرون أنه بناء على هذا المشروع الذي خرج من جامعة تتبع أو تتبع مؤسسة دينية كبرى، أنه يمكن للقادة الدينيين أن يتعاونوا مع العلماء في مواجهة تحديات المناخ والقضاء على التلوث البيئي، وأن يمنحوا المجال لإبداع الشباب حتى يبدعوا أفكارا ملهمة إلهام هذه الفكرة الرائدة التي نشهدها اليوم، وهي عقد قمة خاصة بزعماء الأديان من أجل المناخ، التي نتطلع جميعا إلى نتائجها على أرض الواقع إن شاء الله. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What an inspiring words. I would like now to ask His Eminence Cardinal Miguel Angel Ayoso, Prefect of the Holy See's Dicastery for the Interreligious Dialogue, to speak. In the spirit of unity, shared responsibility, and human fraternity, and at this pivotal moment of the global climate crisis that demands transformative action, our interfaith statement affirms, with representatives of diverse faith and indigenous traditions, convened in Abu Dhabi in the lead-up to COP28 to express our shared concern for the escalating climate impacts that imperil our cherished planet, as well as our common commitment to jointly address this global crisis. We are here to acknowledge that this crisis, which has deep ethical roots, is a propitious moment for conversion and for concrete and urgent decisions that can no longer be postponed. It calls also for an educational process aimed at the integral formation of our consciences with regard to our responsibility towards our neighbors of today and tomorrow's, and towards God, who has entrusted us with the care of our common home. In this regard, Pope Francis' words resonate, although the post-industrial period may well be remembered as one of the most irresponsible in history. Nonetheless, there is reason to hope that humanity at the dawn of the 21st century will be remembered for having generously shouldered its grave responsibilities. End of quotation. So we have to address the serious phenomenon of climate change through a behavior marked by hope and courage at this difficult historical juncture, in the awareness that we are one family and that in the face of the grave challenge of climate change, either we win together or we lose together. We, as religious leaders, heralds of the moral awareness of humanity, have the fundamental task of spreading this awareness and promoting the urgency of action to preserve our common home, since we have inherited a garden.
We must not leave a desert to our children. Thank you. Thank you, Your Eminence. Now we will hear from Rabbi David Rosen, former Chief Rabbi of Ireland. Your Highness, Your All Holiness, Eminences, Excellencies, dear and distinguished colleagues, ladies and gentlemen. The Hebrew Bible, the Torah, the Sinai revelation, makes ecological responsibility a primary religious imperative. The first humans are placed in the Garden of Eden, I quote, to work and preserve it. In other words, to develop and sustain it. It is, of course, precisely such sustainable development that is the key to the health and the future of our planet. The inextricable relationship between our religio-ethical behavior and the environment may be seen in a passage in the Torah that is central to Jewish liturgy, taken from the book of Deuteronomy, that concerns the whole concept of reward and punishment. The passage promises us good rains and harvests and prolonging our days on the earth as a consequence of observing the divine commandments, and warns us of drought and devastation, etc., if the divine word is ignored and desecrated. For the great medieval rational religious philosopher Maimonides, Musa ibn Maimun, this could only be understood in metaphoric terms, as a way of conveying a higher idea of spiritual consequences to our actions in a manner that even the most simple mind and personality could understand. However, today we can understand such passages and ideas literally as never before, because the consequences of human conduct on our environment are so strikingly evident. Human avarice, greed, unbridled hubris, insensitivity and lack of responsibility towards our environment have polluted and destroyed much of our natural resources, interfered with the climate as a whole, jeopardizing our rains and harvests and threatening the very future of sentient life on the planet. Moreover, unrestrained irresponsible indulgence in model society has not only led to far greater cruelty towards animal life exploited for human consumption, but also to further exploitation of large sections of humanity to serve a much smaller sector. Indeed, shocking numbers of human beings languish in hunger, while others over self-indulge. And this lifestyle involves not only enormous cruelty in the livestock industry, but also destruction of natural resources and pollution to our environment on an unparalleled scale. This, of course, should demand of all of us to move towards a lifestyle that is more sustainable, but above all is more responsible in our relationship towards humanity at large. Were we to live in accordance with God's revealed word, with greater humility, with greater responsibility for the vulnerable and the needy, as well as for the sentient and natural world of which we are part and custodians, we could ensure a far more sustainable and flourishing environment that avoids the perils that confront us. Surely it is the responsibility of religious leaders to highlight this inextricable relationship between religion and the environment, which we all acknowledge to be the divine creation testifying to the divine presence. Its degradation is thus a religious desecration of the highest order. It is also the responsibility of religious leaders to educate and to show examples of a more modest and less wasteful lifestyle, one which is more compassionate, sustainable, and serves to ensure the well-being of our planet for future generations. The Talmud, 2,000 years ago, tells a story of a man who was known as Honi the Rainmaker, who came upon a man who was planting a carob tree. He says, "How long does it take for a carob tree to give fruit?" The man says, "Probably about 70 years. He says, 70 years? Then you're never going to eat the fruit from this tree. He said, "That's right." He said, "Why are you planting it?" He answered, "When I came into this world, there were carob trees. So somebody had planted for me. It is my duty to plant for future generations."
That is our responsibility, to plant trees both literally but above all metaphorically, spiritually, morally, to guarantee posterity for future generations. Thank you. Thank you, Rabbi. Now I would like to introduce His Holiness Mahabram Marishi Surikumar Swamiji, Hindu spiritual leader and president of the World Humanity Parliament. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार। सतनाम श्री वाहिगुरु। नमस्कार, प्रणाम सबको। COP28 के अजीम सदर आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबर, मुख्तलिफ मजहबी जमातों के विभिन्न धार्मिक समुदायों के रहनुमाओं, यहाँ के विशेष मंत्रियों, अद्भुत ज्ञान के दाताओं, नेतागण, आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आयोजन समिति को मेरा सलाम। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण बेहद आलूद, दूषित हो चुका है, वातावरण जरासीम रोगाणुओं से भर चुका है, मुख्तलिफ विभिन्न बीमारियाँ फैल चुकी है, पूरे विश्व में त्राही त्राही बची हुई है, मुल्कों के बीच जंग हो रहे हैं, सब जगह अशांति का माहौल है। अबू धाबी की सरजमीन पर आज हम सब इन तमाम परेशानियों के हल के लिए आए हैं। आप सभी पर अल्लाह की बड़ी रहमत है, जो आपने सब पूरी दुनिया की भलाई के लिए सोच रखी है। आपने जो कार्य किया उसके लिए सब आपका स्वागत के, भारत के और पूरे विश्व के जो 50 करोड़ हमारे डिसाइपल हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। कुरान पाक बराह रास्त साक्षात खुदा का कलाम है। कुरान पाक 4:33 में लिखा है कि अल्लाह से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। उसने सारी कायनात को पैदा किया और उससे बढ़कर ना कोई था, न है, न होगा। वो अल्लाह हर समस्या का समाधान करता है। अल्लाह से बढ़कर कोई समाधान करने वाला नहीं है। जिसने केवल एक लफ्ज़ कुन कहकर पूरी कायनात को बना दिया, उस अल्लाह की बात को ना मानने से हमारे सारी ज़िंदगी में गम है, दुख है, परेशानियां हैं, घर में प्रॉब्लम है, देशों में परेशानियां हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने साफ कहा है कि जो भी तुम्हें रोग होते हैं, दुख होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो तुम मुझे भूलने से, खुदा को भूलने से तुम्हें रोग हो रहे हैं, कष्ट आ रही है, और मुझे याद करने से, मुझे जानने से, मुझे समझने से आपकी बीमारियाँ दूर हो सकती है। इसके अलावा आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, ना कोई कर सकता है, ना कर पाएगा। अगर आप ये मेरा नाम लेंगे तो आपकी सब, और मुझे समझेंगे तो आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ज़िंदगी में सारे गम परेशानियाँ दूर हो जाएगी। अल्लाह के जिक्र और उसकी याद से हमारी सब परेशानियाँ दूर होती है। हमारी इन तमाम परेशानियों का हल अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ने स्वयं फरमाया है कि फ़ाइदी कबीरबम, सबके नज़दीक में हूँ, सबके आसपास हूँ। हदीस में स्पष्ट लिखा है कि खालिक और मखलूक के बीच अनेकों पर्दे हैं, ज़मीन के, पानी के, हवा के, आग के, खला के, आकाश के, मन के, अकल के, बुद्धि के, नफ्स के, अहंकार के, ये सब पर्दे हैं। इन पर्दों के करके आपको सारे दुख है। अगर आप अल्लाह के ये पर्दों को जान लो और इसको हटा दो, इन पर्दों के हटने के बिना आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप रोगी होंगे, बीमार होंगे, रोएंगे, हंसेंगे। आपकी समस्या का समाधान जब ये जो पर्दे हटेंगे, अल्लाह की रहमत तब आपको मिलेगी। ऐसा अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है। हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि वह इन पर्दों को हटाकर हमें अपना समर्पण दे, हमारे दिलों में सुकून दे। दुनिया की इन तमाम जो पर्दे हैं, दुनिया की इन तमाम परेशानियों को अपनी रहमत से हल कर दे। और आपकी रहमत के बिना हम कितना पढ़ जाए, लिख जाए, हम कितने समझदार हो जाए, हमारी समस्या का हल नहीं हो सकता। क्योंकि मन से, बुद्धि से, अकल से, दिमाग से किसी समस्या का हल नहीं होता, समस्या और बढ़ती है। आप सभी इत्मीनान से बैठ जाए। कोई 2 मिनट का प्रयोग है जो अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है, उसका मैं 2 मिनट में एक प्रयोग बता रहा हूँ। 2 मिनट के लिए आप सभी आँख बंद कर लें, हाथ पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, और आप हैरान रह जाएंगे, इस प्रयोग से 50 करोड़ लोग ठीक हो गया है, उनकी समस्या का समाधान हो गया है, उनकी टेंशन दूर हो गया है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसकी पूरी कायनात, पूरे डॉक्टर नहीं कर पाए, इस प्रयोग से वो ठीक हो गया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये जो कुरान पाक में लिखा है, ऐसे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए शरीर को ढीला छोड़ दे, आईब्रो को ढीला छोड़ दे, और आप देखेंगे कि अल्लाह का ये जो शब्द बोला हुआ है
पर्दे कैसे हटते हैं और कैसे हमारी समस्या का समाधान हो रहा है। जब हम अल्लाह को इस तरह से पूरा समर्पण कर देते हैं, जब तक हम अल्लाह को समर्पण नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे रोग बढ़ेंगे, हमारे अहंकार बढ़ेगा, हमारे में गुरूर बढ़ेगा कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जिस समर्पण करने से अल्लाह की पूरी रहमत मिलेगी, ऐसा कुरान पाक में अल्लाह ने स्वयं कहा है। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं अल्लाह से, और अल्लाह की रहमत के पर्दे भी अल्लाह से आप दुआ करेंगे तो हटेंगे, वरना आप अपने मन बुद्धि से, क्योंकि मन बुद्धि खुद ही पर्दा है, उससे नहीं हट पाएगा। तो मैं ये आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ, आप सब अपनी आंखों को बंद कर लें और आंखों की भों को ढीला छोड़ दें, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। ऐसा करते ही आपको सुकून मिलेगा। जब अपनी जुबान को मुंह में अब अपनी एक शब्द बोले अल्लाह, सिर्फ एक बार, और सुकून से बैठ जाए। एक बार फिर ध्यान में बोले कुन फया कुन, सिर्फ एक बार। उसके बाद बोले कि आप अल बोलते ही आपकी जीभ तालू पे लग जाएगी और जीभ को तालू पे लगे रहने दें। अल बोलते ही आपकी जीभ तालू पे लगेगी, उस जीभ को आपने तालू पे लगी रहने दो। केवल 2 मिनट के लिए आप सब मेरी ऐसे ही सुकून से बैठे रहे और कुछ नहीं करना आपने। अब आप एक विशेष अल्लाह का अद्भुत एक उसे हम मंत्र बोलते हैं इस प्रारूप के अंदर, और वो मैं एक मन में बटूंगा। अल्लाह ने उसे गुप्त रखा हुआ है, उसको किसी को मत देना, जो गुप्त है उसी के दिया जाए। वो मैं आधे मिनट के लिए बोलूँगा उसको मन में, उसके बिना ये कार्य नहीं करता। अब आप अपने जहन में सोचें कि यह ज़मीन जिस पर हम बैठे हैं ये अब नहीं है, क्योंकि ज़मीन भी पर्दा है, 8 पर्दे हैं और हजारों पर्दे हैं। हम मोटे मोटे 8 पर्दों को लेंगे। पहले आप ये विचार करें, सोचें, सिर्फ भाव करें कि ये ज़मीन हट गई है, जिस पे हम बैठे हैं ये एक पर्दा है और अब नहीं रहा, ये मिट चुकी है, ज़मीन का ये पर्दा हट गया है। अब आप सोचें कि आग भी मिट चुकी है, आग का ये पर्दा भी हट चुका है, ये सब अल्लाह ने कहा है। अब सोचें कि पानी भी सूख गया है, जितना भी पानी है वो सब सूख चुका है। पानी को गर्व है, हमें भी गर्व है, वो पानी के करके है। हमें जो गुरूर है वो हवा करके है, हमें जो गुरूर है वो धरती करके है। जितना भी पानी है वह सब सूख चुका है, पानी का ये पर्दा भी हट चुका है। अब सोचे कि हवा भी खत्म हो चुकी है, हवा जिसके करके हम चलते हैं, जिसके करके हमारा सारा काम हो रहा है, ये हवा भी खत्म हो चुकी है, हट गई है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपने घर में इसको 2 बार करना है, धीरे धीरे आराम से करना है। अब अपने जहान में सोचे, जहन में सोचे कि ये सारा आसमान, हजारों आसमान है, हजारों लाखों आसमान है, ये सारी खाली जगह भी खत्म हो चुकी है, आसमान का पर्दा भी हट गया है, सारी दुनिया खत्म हो चुकी है। हमारी अकल भी अब नहीं रही, हमारा मन बुद्धि भी नहीं रहा, जहन में अब कोई ख्याल नहीं है, हमारे दिल पर भी अब कोई पर्दा नहीं है, ये सारे पर्दे हट चुके हैं। अब हम नहीं हैं, केवल अल्लाह ही अल्लाह है। हमारा मन अल्लाह को नहीं जान सकता, हमारी बुद्धि अल्लाह को नहीं जान सकती, हमारा दिलो दिमाग अल्लाह को नहीं जान सकता। आप महसूस करेंगे कि खुदा की रहमत हमारे कितने करीब है, हमारी सब फिक्रें अल्लाह करता है। इस प्रयोग से आपने, मैंने तो 1 मिनट में बताया, आपने इसको 5-7 मिनट करना है, सुबह और शाम। ये कुरान पाक में, हदीस में इसका वर्णन किया गया है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे प्रयोग करना है आपने, अभी आप कर सकते हो, भी कर ले कि ज़मीन हट गई है। मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, आकाश हट गया है, पानी हट गया है, हवा हट गई है, जल हट गया है, और हम खुद को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर देते हैं। तो अल्लाह हमारी सब फिक्रें दूर करेगा। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, आज हम सब पर बरसी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Thank you, Your Holiness. I would like now to invite Dharma Master Shintao, founder of the Lingzhou Mountain Budapest Society, to deliver his remarks. 各位尊敬的宗教领袖、阁下，各位同愿同行的伙伴们，大家吉祥平安。感恩大会，倾听不同的声音，连接各界的智慧，
看见信仰的力量，借此机会赞叹阿联酋对于近零排碳、干净能源、爱护地球所做的成果跟贡献。宗教共同的连结就是灵性。我们在这个同愿同行的讨论现在的生态危机，以及如何让生态永续，也就是灵性生态。因为灵性即是生态，生态即是灵性。怎么说生态是灵性呢？我们从万有的生命看到它的灵性。万有的灵性源于种子，生命的种子就是记忆体，因为记忆体才能春生、夏长、秋收、冬长，运用四季的变化长出不同的样子，而种子能够养活所有的生命。现在四季错乱，水灾、火灾、风灾、地震频传，这些都是因为人类大量的排碳排、任性的消费，甚至用战争烘烤地球，用核弹炸毁地球。地球的气候只会越来越极端。由于开发抽取石油，南北极冰山无法凝固，因为石油是凝固血的元素，把石油抽完了，支持雪上的凝结的元素就没有了，导致冰山雪崩，四季因此错乱不明。春夏秋冬乱了，种子就无法记忆生长，物种无法生长繁殖，就会灭绝。物种灭绝，人类也会灭绝，因为破坏生态的生存条件就是把自己的粮食切断，这就是如同自杀的行为。过去我们不知道重视生态的价值，现在我们必须从灵性的觉醒认识到人与生态的关系多元共生、相依共存、互济共生的生命共同体。所以我们有责任保护生态，知道生态真正的价值，自然而然就会尊重物种的存在的价值，包容彼此生存的空间，共同成就分享的世界。现在我们缅甸筹备生命和平大学，主要是做生态循环系统教育，生态循环、生态永续的教育，让大家了解我们跟生态之间是伙伴关系，将灵性生态推动到不同的领域，培养未来生态的守护者。祈愿大家共襄盛举，一同成为生态大学的教育的伙伴关系。各位宗教领袖们，我们的责任就是用灵性连接，把这份的爱给生态，让宗教的灵性联合起来，用这份共振共鸣的来守护生态永续，让我们生态的爱心像核弹一样爆炸开来，守护生态的爱心。谢谢。Thank you. Thank you, Dharma Master. Now I would like to introduce by Dr. Satpal Singh Khalsa, Head of the Religious and Spiritual Authority for the Sikh religion in the Western Hemisphere. Respected dignitaries, distinguished guests, brothers and sisters, kindly allow me to greet you in the Sikh traditional greeting, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It's truly a pleasure and an honor to be here to participate with you all in this important gathering.
I wish to thank Dr. Sultan Al Jaber, the UAE government officials, the Muslim Council of Elders, and the United States Environmental Program for hosting this pre-COP28 Faith Leaders Summit to bring awareness to the critical global climate agenda and other issues facing humanity. I believe the faith leaders can play an important role, and the NGOs, as the faith-based organizations, are the largest fraternity of humanity because over 85% of the world's population associates with one religion or tradition. The religious leaders can inspire their communities to address these problems, as conscience and religion are integral to building tolerant, peaceful, and sustainable societies. Though human beings are seen the most intelligent life form on earth, yet they are responsible for almost all ecological damage that we are facing today. Let me speak from the Sikh perspective. The Sikh philosophy declares that the purpose of human beings is to achieve a blissful state and to be in harmony with the earth and all creation. On environment, our scripture says, Pavan Guru Pani Pita Mata Mart Dahan. Air is our Guru, water is our father, and the earth is our mother. Nature is a manifestation of God. Every creature in this world, every plant, every form of life is a manifestation of that one creator. Since they gave me only 2 minutes, so I'll shorten my speech. Sikhs believe that the awareness of the sacred relationship between humans and the environment is necessary for the health of our planet and our survival. Regarding the conflicts in the world, these are mostly due to religious reasons. There is a never-ending debate that my religion is better than yours, my God is stronger than yours, and I am a better human being than you. Well, we must remember that all creation emanates from that one creator, and we are all one. Allow me to quote from the Sikh holy scripture. Avval le Allah noor-e upaya kudrat ke sab bande, ek noor te sab jag upjaya, kaun bhale ko mande. Translated, first Allah created the light, then by his creative power, he made all mortal beings. From that one light, the entire universe welled up. So who is good and who is bad? Friends, the goal of the religion should not be to send the person to heaven, rather create peace within us so that we can merge with God. In the end, let me again thank all the faith leaders, and I earnestly request them to get together and do something about the climate so that we can leave a better world for our future generations. Thank you again. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Dr. Satpal Singh. We will now hear from the 9th Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres. Dear friends, your gathering in the run-up to COP28 comes at a critical moment for humanity and the planet we call home. Climate breakdown is all around us. Record-shattering heat and wildfires, melting glaciers and rising seas, epic floods and storms, all hitting the vulnerable hardest, those least responsible for this crisis. People and planet need action. Action to limit global warming to 1.5 degrees. Action to phase down planet-killing fossil fuels and ramp up the renewables revolution. Action to support developing countries and deliver climate justice with finance for renewables, adaptation and loss and damage. And action from leaders at COP28 to deliver a strong outcome that makes these ambitions a reality. As faith leaders, you are part of this essential work. We need your moral voice and spiritual authority to summon the conscience of leaders, awaken their ambition, and inspire them to do what is needed at COP28 to save our one and only home. And we are counting on your support to give this issue the urgency it needs among the wider public. The path is clear,
The time is now, and we need all hands on deck. Thank you for standing in solidarity and lending your moral voice and great influence to this essential cause. Now, the Interfaith Statement on Climate Action towards COP28. The statement issues a resolute call to action directed to heads of state, governments, non-state actors, and decision makers. It impels urgent responses, including the acceleration of energy transitions, protection of Mother Earth, and the transition to circular models of living in harmony with nature. Moreover, the call encourages a rapid adoption of clean energy. The pledge of these faith leaders is rooted in the principles of justice, causing no harm, and fostering peace with nature. The faith leaders commit to supporting the Faith Pavilion at COP28 and convening in future COPs to inspire hope and action. In a moment, we will invite the religious leaders to come up to the stage and sign the declaration, taking a path across the Earth's equator, and before signing, participate in the planting of a Ghaf tree. The Ghaf tree is the national tree of the United Arab Emirates. It is a tree that can survive in the harshest desert environments. It is a symbol of growth and progress in even the most challenging times. I will now call the religious leaders by name to participate in the tree planting and document signing. His Eminence Professor Mohammed Al-Dawani, Deputy of Al-Azhar Al-Sharif, representing His Eminence the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib. His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Vatican Secretary of State, representing His Holiness Pope Francis. His All Holiness Patriarch Bartholomew I, Ecumenical Patriarch of Constantinople. His Excellency Maulan Ashimbayev, Head of the Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Dharma Master Shin Tao, founder of the Lingzhou Mountain Budapest Society. The Most Venerable Dr. Shinkai Kori, Chief High Priest of Ninbutsushu Sampuzan Muryo-joji Temple. Father Grigory Matrusov, representing His Holiness Patriarchal Kirill, Patriarch of Moscow and all Russia. Bhai Sahib Dr. Satpal Singh Khalsa, Head of the Religious and Spiritual Authority for the Sikh religion in the Western Hemisphere. His Holiness Mahabrahmashi Shri Kumar Swamiji, President of the World Humanity Parliament. Swami Artisawap Rupanda, Head Disciple of the Sri Mata Amritan Damayev Devi. Asharai Lokeshmuni, founder of the Vishwa Shantai Kendra. His Virtue Sheikh al-Islam Allah Shakur Pashazada, Grand Mufti of the Caucasus.
Sister Maureen Goodman, Director of Brahma Kumaris in the United Kingdom. General Bishop Anba Ermia, President of the Coptic Orthodox Cultural Center. His Eminence Sheikh Rashma Sattar Jabbar Hilo, head of the Mandean Sabians in Iraq and the world. Archbishop Julio Mori of the Anglican Church of Central America, representing the Most Reverend Justin Welby, Archbishop of Canterbury. Hussein Burhan al-Din, representing His Holiness Sayyidina Mufaddal Saif al-Din, Sultan of the Bohra community. His Holiness More Ignatius Afram II, Patriarch of Antioch and all the East. Reverend Jerry Pillai, General Secretary of the World Council of Churches. Dr. Muhammad Khalil Nafis, President of the Indonesian Al-Ulama Council. Rabbi Moshe Lewin, Vice President of the Conference of European Rabbis. Ms. Bani Dougal, Principal Representative of the Bahal International Community. Baish Sahib Mohinder Singh Al-Hawali, leader of the Guru Nanak Nishkam Swaik Jatha. Chief Rabbi David Rosen, International President of Religions for Peace. His Excellency Dr. Salim bin Mohammed Al Malik, Director General of the Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization. Bishop Thomas Schumacher, Secretary General of the World Evangelical Alliance. Ms. Debra Boudreau, CEO of the Budapest Tutsi Foundation. His Excellency Professor Mohammed Al-Mahrasawi, former President of Al-Azhar University and Chairman of the Higher Committee of Human Fraternity. His Eminence Cardinal Miguel Angel Ayuso, Prefect of the Holy See's Dicastery of Interreligions Dialogue. Huzumi Tokita, representing spiritual leader Ko Okada.
What a beautiful landmark moment. The statement will now be presented to COP28 President-designate His Excellency Dr. Sultan Al-Jaber by Salam Al-Dhahri. Now, His Excellency COP28 President-designate Dr. Sultan Al-Jaber will deliver his remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Highness, Sheikh Nahyan bin Mbarak Al Nahyan, Your Excellencies, distinguished guests, and eminent leaders of the many faiths represented here this evening, it is indeed with great honor that I join you this evening in this very important gathering. Allow me to begin by thanking the Muslim Council of Elders for organizing this very important event and this very inclusive gathering. Let me also express my appreciation for the meaningful messages that we just heard from faith leaders across the entire religious spectrum. Excellencies, today's Abu Dhabi Interfaith Statement for COP28 is of special significance. This document is signed by 28 religious leaders, many of whom are with us this evening. You combine all faiths around a single message of our shared humanity. You are the custodians and the beliefs and the aspirations of the vast majority of everyone living on this planet. And you are a powerful voice for many communities that are not heard. Your collective faiths continue to inspire all people to live in harmony with nature and to act to protect our fragile world. And together, you have made a powerful statement of intent that the world needs to hear. A statement of urgency, a statement of unity, solidarity, responsibility, and hope that can only help the collective drive for transformational climate progress. As you know, we are just 3 weeks out from the most significant and inclusive COP28. COP28 is mandated to deliver the first ever global stocktake. COP28 will report on progress over the last 7 years. COP28 will lay out a clear direction to make up lost ground and map out a common future for climate-positive growth and ensure sustainable socio-economic development. This COP
is a moment of truth for the world to align around ambitious, negotiated outcomes for every nation, every faith, every community, every family, and every single person living on this planet. We are seeking real, practical, and game-changing results across the entire climate agenda, from mitigation, adaptation, means of implementation, and loss and damage. And on loss and damage, after an extraordinary long meeting hosted here in Abu Dhabi this past weekend, I am very pleased to report that we are one step closer to delivering a fully operational fund. Parties finally came together in unity and solidarity to show that multilateralism can still work for everyone, especially the most vulnerable. And I will continue to push for early pledges to make sure the needs of the most impacted by climate change are actually met. Excellencies, COP28 will drive action around 4 key priorities. Fast-tracking a fair, just, equitable, orderly, and responsible energy transition. Fixing climate finance, focusing on people, lives, and livelihoods, and most critically, making COP a true, fully inclusive COP. Inclusivity will be the defining hallmark of COP28, because we in the United Arab Emirates know that progress is always powered by cooperation and partnership, and that success is secured through unity and solidarity. That is why I am so grateful for today's important declaration. You have brought together diverse faiths around a common goal and have shown that in a divided world, we can unite around climate action. COP28 will give faith leaders the opportunity to participate and contribute alongside all other stakeholders, including political, business, and civil society leaders. As such, we will host the first ever faith pavilion dedicated to continuing the conversation you have started here this evening. We will amplify the powerful messages of today's declaration. And the UAE will be honored by the presence of His Holiness Pope Francis at COP28's World Climate Action Summit. The same applies for the fact that we will be hosting the Grand Imam Sheikh Ahmed Al-Tayyib of Al-Azhar. In the time remaining before COP28, let me call on all faith leaders to mobilize your communities around the world. Educate your young people on climate science. Activate the business community to join our action agenda. And call on your political leaders to come to COP28 ready to find common ground and consensus around the highest possible ambition. Excellencies, let me conclude by recalling the messages of your statement that really resonated with me. Let's create solidarity around common humanity. Let's act with urgency. Let's heal our wounded world. Let's bring back hope for our children and their children. Let's leave a legacy of climate resilience for generations to come. Let's make traction for real action. Let's send a clear message from the United Arab Emirates, a message of tolerance, a message of peace, optimism, and prosperity. And on my part, I promise I will carry your message forward to the world through COP28.
I thank you. I thank you all, and I look forward to receiving you all at COP28. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your illuminating and reflective remarks. I would like now to invite His Excellency Sheikh Nahyan bin Mbarak Al Nahyan, UAE Minister of Tolerance and Coexistence and Muslim Council of Elders Secretary General Judge Abdel Salam, to join His Excellency COP28 President-designate Dr. Sultan Al Jaber and the religious leaders on the stage for a photo. Your Highnesses, Your Excellencies, honored guests, ladies and gentlemen, it has been an absolute privilege for me, Nof Al-Kithiri, to be your host for this evening. We witnessed a moment of unity built upon diversity, where people of different faiths and perspectives and backgrounds have come together to address the climate crisis. A reminder that collectively we can go farther and accomplish more than we can in silos. May this summit be the start of new partnerships and new action towards climate care and a renewed hope in restoring planet Earth. Thank you, and we look forward to see you all in dinner.